Hello everyone, I'm Zahor Islam, and today my presentation topic is immunity, acquired immunity, active immunity, and passive immunity. So this is a very important topic for each and every student. So you will have to memorize all these contents on a fingertips. In simple words, immunity it is the tendency or capability of an individual to show resistance against all form of parasitic organisms. These microbes may be bacteria, so it may be virus, it may be protozoans, it may be anything which can activate your immune system. So, acquired immunity, it is the type of immunity which is usually developed during your developmental stage or during your life. Then, acquired immunity, or that is also called adaptive immunity. So, the second one is active, and it is further classified into two categories. So, the first one is active, and the second one is passive immunity. So how we can differentiate between active immunity and passive immunity? So in active immunity, this is the type of acquired immunity, or you can say acquired active immunity. So an active immunity, it is the type of immunity when you develops, for example, a person who is exposed to an infections or from getting a vaccines. While the passive immunity is the type of immunity which is acquired from someone or something else. So in passive immunity, the person or an individual become unable to produce antibodies, and we know that these antibody they are produced against certain type of pathogens, certain type of antigens. There are many examples of passive immunity. In passive immunity, this immunity is provided when a person is given antibodies to a disease rather than producing them through or her own immune systems. So, another good example is a newborn baby acquired passive immunity from its mother through the placenta. Furthermore, the active immunity they are divided into two groups. One is natural active immunity, and the second one is artificial active immunity. So the naturally acquired immunity is that type of immunity. So when the antibodies, so they are made after exposed to an infections. So natural active immunity, and this type of immunity, the antibodies they are produced after exposure to an infection. So, for example, when a person's or when an individual he or she is exposed to an infection, so after exposure to the infection, so there may be productions of certain antibodies. So that is called natural immunity, or known, and it is also known as innate immunity, or this is also known as instinctive immunity. While the second one is artificial immunity. So in artificial immunity, the antibodies they are made after getting a vaccinations. Because vaccine they are also antigenic preparations, and usually these vaccines it is said to be formulated, or it is said to be produced from the, you can say, from the certain microbes, dead and live microorganism. So the artificial one is the antibodies made after getting a vaccinations. Another one is passive immunity. So in passive immunity, it is classified into two categories. One is natural passive immunity, and the second one is artificial passive immunity. So the natural passive immunity or artificial passive immunity, and natural passive immunity, actually the antibodies they are formed against antigens, and then these antibodies it will be transmitted from mother to the baby. So for example, through milk. And artificial passive immunity, this is clear.
that there must be the production of antibodies against antigen. You know, there are two type of antigen. So one antigens is that which is capable to stimulate the formation of antibodies. Mean your immune system. Um, it cannot be activated, but those antigens which can attack from outside environment. So the antigens, these are foreign bodies like bacteria, such as virus, pathogen, fungus. But there are some other antigens which are present on the surface of the red blood cell of every person. So with the help of these antigen, you can find out and you can determine the blood cells, you can determine the RBC, red blood cell, you can determine the blood group of a person. For example, a person having a blood group A positive, so it means that on the surface of the red blood cell of that person, so RBC antigen A is present and antibodies B is present on the surface of red blood cell. So that's why I'm trying to clear your basic concepts about the artificial and natural passive immunity. So, an artificial passive immunity, the antibodies acquired from an immune serum medicines. I mean that the artificial immunity, the antibodies, they are formed, but after injecting some drugs in the form of vaccines or in the form of medicine, so ultimately it will produce antibodies against these antigens. So this lecture is overall about the immune system. So I mean that let's suppose if a person having a weak immunocompromised person whose immune system is weak. So by boosting his immune system, you can inject some vaccines. So with the help of these vaccines, some antibodies they are formed against antigen. Before studying immunity and before studying the blood grouping, so you will have to clear your concept about the antigen and antibodies. So you know that antibodies, these are the glycoproteins which are also produced in the body of vertebrates. Immunity and its types, look at the layout. So immunity, there are two types. One is adaptive and the second one is innate immunity. And then adaptive immunity, it may be natural or as well as artificial. The natural is further divided into two. One is passive and the second one is active. So passive immunity is maternal from mother side and active immunity is infection. If a person who is exposed to infection, so there will be the production of antibodies against these infectious agents and which are exist in the form of antibodies. And artificial is that is passive immunity. For example, transformation of antibodies from one person to another person, from mother to child. And active immunizations, it means your own immune system is strong. So it means that there is no need of I think immunization, passive immunization, because your immune system is active. Okay. Uh, uh, So acquired immunity or active acquired immunity और इसके जो टाइप्स है एक्टिव इम्यूनिटी पैसिव इम्यूनिटी फिर एक्टिव इम्यूनिटी में नेचुरल है आर्टिफिशियल है पैसिव इम्यूनिटी में नेचुरल है और इसके अलावा आर्टिफिशियल है तो असल में एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो है दिस टाइप ऑफ इम्यूनिटी इज डेवलप्ड ड्यूरिंग योर लाइफ इम्यूनिटी इन सिंपल वर्ड इसको हम क़ुव्वत मुदाफ़ियत कह सकते हैं तो क़ुव्वत मुदाफ़ियत यानी आपकी बॉडी की वो कैपेबिलिटी वो टेंडेंसी जिसके ज़रिए आपका बॉडी जो है वो रेजिस्टेंस शो करे माइक्रोब्स के खिलाफ जरासीम के खिलाफ बैक्टीरिया वायरस एंड अदर प्रोटोजोन्स फिर इसमें एक्टिव इम्यूनिटी है तो एक्टिव इम्यूनिटी में इम्यूनिटी you develop after being exposed to infection. एक बंदा जो है फॉर एग्जांपल वो इन्फेक्शन को एक्सपोज हो गया, so after exposure
to that particular infection. So इन्फेक्शन का नाम जब आता है तो इसका मतलब है कि इसमें माइक्रोब्स इन्वॉल्व होगा, ठीक है। तो उसी दौरान जो है आपका जो इम्यून सिस्टम है वो एक्टिवेट होता है और उसको फिर हम एक्टिव इम्यूनिटी कह सकते हैं। इसी तरह पेसिव इम्यूनिटी, यानी पेसिव इम्यूनिटी जमुंग सरा कलचे जमुंगा इम्यून सिस्टम पलबानी कमजोरी भी उमंग मतलब बाहर नमंगा मतलब दारे चेहरा वैक्सीन शू या दासी सोर्स इस्तेमाल को चेहरा मंग पेसिव इम्यूनाइजेशन विशी, ठीक दा नो दागे सर जमंगा इम्यून सिस्टम चिकम देगा बूस्ट अप शी दगा शान एक्टिव इम्यूनिटी इसके दो टाइप से, एक नेचुरल है। नेचुरल तो वो है कि डेफिनेटली जब कोई एंटीजीन्स आपके बॉडी पे अटैक करता है तो डेफिनेटली आपका इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होता है। तो आपका जब इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होता है तो इम्यून सिस्टम एक्टिवेशन के दौरान या स्पेशली उस एंटीजीन के खिलाफ आपके बॉडी में एंटीबॉडीज बनते हैं आफ्टर एक्सपोजर टू इंस्पेक्शन, और ये नेचुरल होता है, ठीक है। और जो आर्टिफिशियल होता है तो आर्टिफिशियल वो है कि जिसमें एंटीबॉडीज बनते हैं आफ्टर गेटिंग ए वैक्सीन। जब हम वैक्सीनेशन वगैरह करते हैं तो हमारे बॉडी में एंटीबॉडीज बन जाते हैं। तो असल में इसमें एक्सटर्नल सोर्स इन्वॉल्व हो गया तो मैं कह सकता हूँ कि ये आर्टिफिशियल है, ठीक है। इसके अलावा जो पैसिव इम्यूनिटी इसमें नेचुरल और आर्टिफिशियल है। तो नेचुरल में ये होता है कि आपके जो एंटीबॉडीज है उसका इट कैन बी ट्रांसमिटेड, उसका ट्रांसमिशन होता है मदर टू बॉडी। नेचुरल में फॉर एग्जांपल मिल्क जो है, ठीक है, मिल्क के जरिए ये एंटीबॉडीज जो हैं ये बेबी से या सारी मदर से बेबी के बॉडी में जो है वो मुंतकिल होता है। इसके अलावा आर्टिफिशियल में आपके जो एंटीबॉडीज हैं, एंटीबॉडीज एक्वायर्ड फ्रॉम एन इम्यून सीरम मेडिसिन, जिस तरह मैंने आपको कहा कि आर्टिफिशियल में चूंकि नेचुरल नहीं होता, ठीक है, तो मतलब बाहर से कोई इंजेक्शन हम लगाते हैं या मेडिसिन वगैरह हम यूज करते हैं और उससे हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो बूस्ट अप हो जाए, ठीक है ना, इट बिकम बूस्ट अप। ये बहुत सिंपल आपको ये लेआउट जो है यू कैन सी ऑन माय स्क्रीन। इम्यूनिटी और इसके कुछ टाइप्स है। तो इम्यूनिटी में एडॉप्टिव इम्यूनिटी है, फिर इनेट इम्यूनिटी है। एडॉप्टिव इम्यूनिटी तो ऑलरेडी मैंने कह दिया कि भाई टाइम के साथ साथ, ठीक है, विद द डेवलपमेंटल स्टेजेस, ठीक है। तो आपका जो इंटायर लाइफ है, ठीक है ना। तो इसके अलावा इनेट इम्यूनिटी चूंकि ये कुदरती है, नेचुरली है, इट इज एग्जिस्ट फ्रॉम द टाइम ऑफ योर बर्थ, ठीक है ना। सो दिस इम्यूनिटीज एग्जिस्ट आफ्टर योर बर्थ, ठीक है। एक बच्चा जब पैदा होता है तो नेचुरली उसका अपना एक नेचुरल इम्यून सिस्टम होता है, ठीक है। इसके अलावा एडॉप्टिव इम्यूनिटी में फिर नेचुरल है और इसमें इसके अलावा आर्टिफिशियल है। नेचुरल में फिर पेसियो और एक्टिव है। पेसियो में स्पेशली जिस तरह मैंने आपको कहा कि मदर जो है उसकी बॉडी में जो एंटीबॉडीज बनते हैं तो वो एंटीबॉडीज जो हैं वो चला जाता है कहाँ, वो असल में उसके बेबी में, ठीक है, चाइल्ड में प्लेसेंटा के जरिए। और नेचुरल में फिर एक्टिव है। एक्टिव तो वो है कि जब कोई बंदा जो है एक्सपोज हो जाता है स्पेशली एंटीजीन्स या इन्फेक्शन, तो डेफिनेटली उसके खिलाफ हमारे बॉडी में फिर एंटीबॉडीज बनते हैं। और आर्टिफिशियल में पेसियो है और एक्टिव है। तो एक्टिव तो ऑलरेडी इम्यूनाइजेशन जो है आपका इम्यून सिस्टम जो है वो स्ट्रांग होता है। पेसियो में आपका इम्यून सिस्टम कमजोर होता है तो बाहर से हम एंटीबॉडीज देते हैं और इससे आपका जो इम्यून सिस्टम होता है सीखे सो इट बिकम बूस्ट अप। तो इंशाल्लाह जिस तरह मैंने आपको कहा कि एंटीजीन दो किस्म के, कुछ एंटीजीन वो होते हैं जो आपके इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करता है। आपका इम्यून सिस्टम तब तक एक्टिवेट नहीं होता जब तक ये फॉरेन बॉडी आपके जिस्म पर अटैक नहीं कर, ठीक है। तो याद रख लें कि हर एंटीजीन के लिए, जिस तरह कुछ एंटीजीन जो है हमारे लिए फायदेमंद है, जिस तरह आपके आरबीसी आपके ब्लड सेल्स में जो एंटीजीन है उसको मैं क्या कहूँगा, ठीक है, उसको मैं फॉर एग्जांपल अगर किसी का ब्लड ग्रुप जो है ए पॉजिटिव है तो इसका मतलब यह है कि उसके आरबीसी के रेड ब्लड सेल पे एंटीजीन ए मौजूद है। अगर किसी और इसके अलावा इसके खिलाफ जो है एंटीबॉडीज भी होंगे। ये आपको जो शेप नजर आ रहा है ये बिल्कुल ये दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडीज,
ठीक है। एंटीबॉडी स्ट्रक्चर, दिस इज समथिंग एल्स। ये आपको एंटीबॉडीज में लाइट चेन है, हेवी चेन है, डाइसल्फाइड बॉन्ड है, ठीक है। तो कहने का मकसद है कि एंटीजीन के खिलाफ एंटीबॉडी जरूर होगा, ठीक है। ये आपका एंटीजीन है, नजर आ रहा है, दिस इज योर एंटीजीन और ये आपका एंटीबॉडी है। तो कहने का मकसद ये है कि ये एंटीजीन, हर एंटीजीन के साथ जो है एंटीबॉडी जो है दे आर पेक्स। अब ये आपको जो एपिटोप्स, एपिटोप्स जन एपिटोप्स का मतलब दीज आर एंटीजीनिक, ये असल में इसको एंटीजीन प्रेजेंटिंग सेल्स भी कहा जाता है, एंटीजीनिक डिटर्मिनेंट्स भी कहा जाता है। किसी भी एंटीजीन को मालूम करने के लिए हम एपिटोप्स को देखते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा ये एक बैक्टीरियल सेल्स है, ये भी आपको एंटीबॉडीज नजर आ रहा है। सो आप कोशिश करें कि इस लेक्चर को प्रॉपरली रिव्यू करें। इसके बाद में इंशाल्लाह फिर ब्लड ग्रुप पे आई विल डिलीवर इंशाल्लाह स्पेशल lecture on the blood group, ठीक है। So if you have any question regarding my present lecture, so you may ask or you can directly contact me through my WhatsApp or email. So I'm always available for any kind of services. Thank you so much for watching my lecture. So if you didn't subscribe my channel, so kindly subscribe it and press the bell icon for upcoming lecture. Wish you all the best.